Just a quick recap of what we did last time. So अभी याद हो. So last time मैंने ये बताया था, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 representing the point x1 y1, okay, and if I have a complex number Z2, that means this is x2 plus I y2, this is x1 plus I y1. Now this complex, this vector is actually Z2 minus Z1. It's always head minus tail. ये बताया था, okay? And अगर हम इसका मॉड्यूलस निकालें, ठीक है, तो मॉड्यूलस एक्चुअली गिव्स अस द लेंथ ऑफ EB, मतलब डिस्टेंस बिटवीन these two points. And अगर मैं इसका आर्ग्यूमेंट निकालूं, the argument जो होगा वो एक एंगल होगा थीटा. वो एंगल कैसा होगा? वो ये एंगल थीटा होगा, which we had, I think we calculated tan theta. It was y2 minus y1 upon x2 minus x1. You recall? Tan theta y2 minus y1 upon x2 minus x1. So these are results we have got. फिर हमने ये भी देखा था कि वेक्टर्स जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है they add like vectors, right? Now, so I just rub this point क्योंकि last time we किया था, just to remind you what we had done. We continue off from here. Now in today's class, we are going to do some properties of argument. Last class से properties of modulus किया था, and उसके बाद I am coming to geometry, full-fledged geometry, जिसमें हम locus करने वाले हैं, ठीक है? Now, first thing I do, properties of argument. Now this is actually quite simple, क्योंकि तुम्हें सारा knowledge तुम्हें already दिया गया है, थोड़ा सा अभी उसका just sort this out. Suppose if I have a complex number z, okay, and z is x plus iy. इसको हम पोलर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं r into what? Cis theta. Cos plus iota sin. Okay. Now z conjugate जो होगा वो क्या होगा? x minus iy. In polar form ये क्या होगा? R cis minus theta. Yes, it will be r cis minus theta. Why is that? Reflection, ना? Remember? एक तो ऐसा है कि इसका एंगल माइनस थीटा है, z कॉन्जुगेट का r सेम है. Another way to look at it is कि देखो कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट को नेगेटिव कर दिया. ओके, so one very important first property, argument of z conjugate is negative of argument of z. Their arguments are negative of z. ठीक है? Second, suppose we have two complex numbers z1 and z2. ठीक है? And suppose इनके polar forms कुछ ऐसे हैं. इसका मॉड्यूलस r1 है, इसका मॉड्यूलस r2 है, और इसका आर्ग्यूमेंट θ1 है, इसका आर्ग्यूमेंट θ2 है. So these two can be written in polar form like this. Now, what happens if I multiply these two? Multiply कर दिया तो क्या हो जाएगा? This is r1 into r2 into cis θ1 into cis θ2. What is this? What is cis θ1 into cis θ2? Yes, so you have seen this before. Cis of θ1 plus θ2. Okay. So now, this complex number, this is a new complex number. इस complex number का modulus क्या है? Remember, whenever you take any complex number and write it in polar form, जो cis के बाहर होता है, if it's a positive quantity, it is the modulus.
and ये क्या होता है? Argument. So treat this like a new complex number, Z1 into Z2. इसका modulus क्या है? R1 into R2. So R1 into R2 is the modulus of Z1 into Z2, which you already knew, I think. Modulus of Z1, Z2 is product of the individual modulus. Most importantly, what is the argument of Z1, Z2? It's this angle over here, theta 1 plus theta 2. So this is theta 1 plus theta 2, which we can write it as argument of Z1 plus argument of Z2. Okay? Is this behaving like some function unit, you know? Log. Yes, it's behaving like log. Okay? Okay. Third property, which is actually very simple, which comes from here only. Z1 by Z2 would be two complex numbers in the polar form. So this is R1 upon R2 times cis theta 1 by cis theta 2 would be cis of theta 1 minus theta 2. So what is the argument of this? It's theta 1 minus theta 2. And theta 1 minus theta 2 can be written as, what is theta 1? Argument of Z1 minus argument of the second complex number. Is that clear? Okay. And there are some more properties also. I'll just write that down. I'll copy kar lo. Any doubts so far? सर हाँ बोलो. सर वो जो सिस माइनस थीटा है तो माइनस साइन फंक्शन के बाहर आ सकता है क्या? हाँ, cos minus theta रहेगा ना. देखो. You can write it like this. Cos of minus theta is complete. क्या प्रॉब्लम है? सर मतलब डायरेक्टली सिस के बाहर आ सकता है क्या बाहर आ सकते हैं? सर डायरेक्टली माइनस बाहर आ सकता है नहीं ब्रैकेट से हाँ हीरोगिरी मत करो. ओके सर सर सिस थीटा का ग्राफ कैसा रहता है? अच्छा, first of all, cis theta is not a real function. Okay? Cis theta is not a real function. It's a complex. Cis theta जो होता है, it's a complex number. It has two components, real part and imaginary part. अगर तू बोले cis theta का real part का ग्राफ बनाओ तो cos theta हो गया. Okay? यस सर. कब कर दूँ? Sir, here only if R is positive, it is the modulus of the. If it is negative, then. I'll come to that. If R is negative, then क्या करना है? हाँ. Fourth condition में सर R1 by R2 मॉडल. हाँ, obviously. I am talking about only argument here. So, if you look at only argument, it is theta 1 minus theta 2. अच्छा, just to give you an example, देखो, अगर एक नंबर है 2 into cis pi by 3, तो इसका मॉड्यूलस 2 है एंड इसका आर्ग्यूमेंट pi by 3 है. बाहर अगर एक नेगेटिव नंबर है तो क्या करना चाहिए? क्या माइनस से 5 टाइम्स cis pi by 4. Now, if there is a negative number outside the cis, you can't say that उसका आर्ग्यूमेंट pi by 4. That would be wrong. What you would do is, you would write 5 times minus 1. और -1 को लिखेंगे cis pi. This is -1. Okay, cos pi plus iota sin pi. And then you apply the property. तो इसके अंदर ले जाओ तो क्या बनता है? Add the angles up. Correct. Now this is your argument, not the original one. समझ में आया? ठीक है? But the modulus still will be 5 only. हाँ, modulus will be 5. Argument में change. So actually, what do you think this will be?
Yes. N argument Z. Log की तरह हो रहा है. Okay? Because if you take the number z raised to n, r cis theta raised to n, this will become r raised to n into cis theta raised to n, and I think I've done this last time. Cis theta raised to n is Cis and theta. yes. Okay? So the argument of z raised to n is n times theta. N times theta, where theta is this. समझ में आ रहा है? Then, the most simple properties, like if you ask me what is argument of minus z, क्या होगा? Argument of minus z. So this you can write it as argument of minus 1 into z. अच्छा अभी product में है तो क्या करूँ? Use it like log. So it becomes argument of minus 1 plus argument of z. The argument of minus 1 you can take it as pi. Actually minus 1 कहाँ lie करता है? यहाँ lie करता है ना? ठीक है? This is the number minus 1. It lies on the real axis. Argument is what? The angle. What angle is this? Pi. Is this clear? अच्छा इसको minus pi भी बोल सकते हो, like if you take it from clockwise. So I sometimes in some books you will also see plus minus pi. ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है? It's the same thing. Okay. अच्छा. So what I will do now, I'll just give you some questions and then we'll move to locus, geometry. Okay. So copy this down. Questions करेंगे. Any doubts? ये फोर्थ वाले प्रॉपर्टी से हम i रेज़ टू i निकाल सकते हैं क्या? I'll come to that. I'll come to that. Okay. इससे sort of इससे नहीं but किसी और से निकालेंगे. I raised to I से नहीं निकालेंगे. Okay, the first one is fairly simple. Third one is ठीक ठाक है. The second one is really tough. फर्स्ट और सेकंड का मतलब सब पार्ट हाँ, दोनों. this. हाँ. First वाला easily हो जाता है. अरे आर्ग ऑफ माइनस वन को पाई भी ले सकते हैं, माइनस पाई भी ले सकते हैं. यार अगर मैंने माइनस पाई ले लिया या पाई लिया, इट्स द सेम थिंग बिकॉज इफ यू ऐड 2 पाई टू एन एंगल डज इट चेंज द वैल्यू? ठीक है ना? At least get the first one, okay? Okay, किसी का फर्स्ट वाला चलते लिख ही रहे हो क्या? सब हो गया? सर थर्ड वाला ट्राई कर सकते हैं. हाँ कर लो, फर्स्ट कर लो. ये तो शायद तुम्हारी क्लास में भी करवाया था कोई तो डिवीजन क्लासेस में. Just try it anyways.
Okay, so I expect first one's answer हो गया. जो प्रॉपर्टी मैंने बताई वो blindly लगाना है. Now when you look at argument of say iota z bar, उसको हम split कर सकते हैं log की property, log के बिना होना चाहिए. कैसे? arg z, this arg behaves like log, तो उसको split करो. arg of iota plus argument of z bar. Now what is argument of iota? अच्छा, argument क्या होता है? कोई भी complex number है, it's basically the position vector of that point. So argument क्या देता है? Angle made by. अच्छा. Now if you look at iota as a complex number, वो कहाँ lie करता है? Imaginary axis. कौन सा point है वो? 0,1. वो कहाँ lie कर रहा है? This is iota और 0,1. अच्छा, so ये point को radius vector बनाओ. क्या angle बना रहे हैं? With that. 90. Pi by 2. So this is argument of z. This is pi by 2. Now what is the relation between these two quantities? Arg of z Bar is minus. So you get 2 times arg z is pi by 4, pi by 2. Okay. Like immediately तुम्हारे इसमें आना चाहिए. जैसे अगर मैं बोलूँ argument of minus iota क्या है? Argument of minus iota. Minus 90. Argument of 1. Argument of 1. 1 मतलब कौन सा point? 1,0 real axis पे 1 plus 0 iota. So इसका argument 0. Argument of minus 1? 180. 180. Okay. Now, this second question is not so easy. It's actually quite difficult. We have to prove this. मैं mod z को उधर ले जा सकता हूँ. I can multiply the mod z on the other side. पहले LCM लेंगे of course. ठीक है? So I just simply have to prove this. Now इसको हम geometrically देखेंगे. Okay, so ध्यान से सुनना, all of you. देखो, see, z is a complex number जो कि suppose यहाँ होगा z, okay, and ये length mod z, okay. Now what I'm going to do is this. I'm going to draw a circle with center as origin. ऐसे इसको ऐसे circle बनाते हैं ऐसा. ठीक है? Circle का radius क्या है? Mod z is the radius. Okay. Now this is a complex number z. अच्छा एक बात बताओ, real numbers कहाँ पे होंगे? इस plane में real numbers कहाँ पे होते हैं? On the real axis. ठीक है? Positive real numbers कहाँ होते हैं? On the positive real axis. Okay. Can you tell me where would this number be? Where would the number mod z be? See, this is a real number. Mod z is a real number. वो कहाँ होगा? Where? हाँ. देखो ये रेडियस mod z है, ठीक है, and this would be a real number जिसका value mod z है. Okay. Now look at this very carefully. Z minus mod z. Z minus mod z. I talked about like just recap जब मैं बता रहा था. Like if I have z1 minus z2, that is a vector going from some place to some place. Okay, कोई भी vector head minus tail होता है, right? So this is a vector जिसका tail यहाँ पे head यहाँ पे. तो ये क्या है? ये क्या है? Which vector am I talking about?
ये, oops, talking about this vector, this which is going from Z over here, head यहाँ पे, tail यहाँ पे. Are you getting it? Okay, clear so far? Okay. Now, when I take mod of a vector, what does that give me? If I say, अच्छा इसका mod निकालो, तो mod क्या होता है? Mod is the length. Okay. So suppose if I call this point A, if I call this point B, this would be length AB. Is that right? Okay. Now, this covers the LHS part. What is the LHS? In the geometry, it is length AB. Now, what is the RHS? Can you figure that out? The R. Correct. Anybody else? What do you think the RHS is? Length of arc. Length of arc. Length of arc. Yes, yes, yes. See, this is the radius, and argument of Z would be this angle theta. And तुम्हें पता है ना, length of arc is r theta. So length of arc is radius which is mod Z, and the angle theta, of course mod में इसलिए डाला क्योंकि पता नहीं कि positive है कि negative है. Okay, it's like this. So the length of arc. Obviously, length of chord बड़ा है कि length of arc बड़ा है? Length of arc. Arc बड़ा है. Therefore, you have RHS being greater than LHS. समझ में आया? Okay, ठीक है. So here, length of chord is greater than length of arc. Okay. Now copy this. एक काम करो. ये हो गया हमारा. ये हो गया हमारा. Please try question 3. Then do question part B. ये थोड़ा tough है. I will discuss this. So copy करो. सर Oh, sorry. सर आपको इक्वल की साइन लगी है, तो कौन सी केस में रहेगा सर इक्वल? Length of arc greater than length of chord. Wait. अच्छा यार, equal कब होगा? जब ये point इधर होगा. Like when this point will be over here. When A and B are coincident. Okay sir. ठीक है? Sir, can you explain that head to tail part wax? ठीक है. Wait, पहले copy कर लो. I'll explain it. You want me to explain it in general or only for this example? Only for this example. Okay. Copy कर लो पहले. सर ऐसा कोई theoretical proof है कि ग्राफ से ही कर सकते हैं? Theoretical proof तो है. समझ के बारे में. नहीं. थोड़ा सा इसमें calculus, मतलब you need to know theta is greater than sin theta. वो एक inequality one. सर उसमें s इक्वल टू आर थीटा में s इक्वल टू मॉड आर जेड क्यों आर जेड ही. अरे इस एग्जांपल में मैंने थीटा आर जेड थीटा होता है आपका. बट यार थीटा कैन बी नेगेटिव. ओके व्हाट द लेंथ ऑफ आर्क. बट हाँ, आई एम टेकिंग सब थीटा कैन बी -30 डिग्री आल्सो. बट इफ यू टेक मॉडुलस -π/6 के बदले π/6 लेना. टेकिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट. I just explain this again. Have you copied? Okay. So please try the third one and then part B. Okay. Now, जिन लोगों को डाउट था इसमें, see, जैसे अगर ये Z1 वेक्टर, if you have a point Z1 and Z2, then the vector joining these two points is Z1 minus Z2. This is head minus tail. Now in this particular example, देखो, अगर एक real number है 5, if you take a number 5, वो 5 number इधर आएगा, and be at a distance of 5. 5 plus 0 iota मतलब 5,0. Okay? The same idea is this only. Z को मैंने यहाँ लिया कहीं भी randomly. Now mod Z, it's a real number. तो वो कहाँ lie करेगा? It will lie on the axis only, but at a distance of mod Z from the origin. Therefore, it lies in the circle only on the axis.
ठीक है, एंड देन यहाँ पे हमने क्या किया, हेड माइनस टेल कर दिया, हेड माइनस टेल. So this vector and dot product. And when I take mod of this vector, it becomes the length. And this length is obviously less than the chord length, the arc length. Okay? Is that clear, your doubt? Yes, sir. So please do the third one. सर हो गया सर, Part हो गया. सर फैन की स्पीड कम कीजिए, आवाज है. AC की स्पीड तो आती नहीं है. एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है. नहीं, ये ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नहीं है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का है. हाँ, ऑल्दो ऐसा एक सम था, बट कॉम्प्लेक्स नंबर से तो बहुत इजी है. इट्स अ क्वेश्चन ऑफ योर बुकलेट, यूसी का ट्रिगो, बट ये कॉम्प्लेक्स नंबर से इमीडिएटली हो जाए. याद आया? Okay, the third question. It's given that cos alpha plus cos beta plus cos gamma is 0 and sin alpha plus sin beta plus sin gamma ये भी 0 है. ठीक है? What I will do is this. I will assume, define three complex numbers z1, z2, z3. Let this be cos A, cos alpha plus iota sin alpha. Let this be cos beta plus iota sin beta, and let this be cos gamma plus iota sin gamma. Okay? And so what happens when we add them up? सारे cos add up होके क्या देते हैं? 0. Sum of the sines is sin alpha sin beta is 0. We get 0. अच्छा, when z1 plus z2 plus z3 is 0, we get this relationship, no? Then z1 cube plus z2 cube plus z3 cube is 3abc. ये पता है? ठीक है? Now what is z1 cube? This is cis alpha, this is beta, this is gamma. Cis alpha cube, cis beta cube, cis gamma cube is 3 times cis alpha into cis beta into cis gamma. Now cis alpha cube is cis 3 alpha plus cis 3 beta plus cis 3 gamma. जब cis मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके एंगल्स ऐड होते हैं. It becomes 3 times cis of alpha plus beta plus gamma. We get this relationship. Now what we will do? We will equate their real parts. And you can also equate their imaginary parts. So इसका real part क्या है? Cos 3 alpha plus cos 3 beta plus cos 3 gamma is 3 times इसका real part है. हो गया. Okay? Is this clear? कॉपी करो. सर इसको बिना कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत लंबा हो जाएगा, बट कर सकते हो. उसी के क्वेश्चन है वैसे. इट्स थोड़ा सॉल्विंग करना पड़ेगा, बोर्ड भर जाएगा. I'll do it, but I don't want to do it actually. मन नहीं कर रहा है. Complex numbers is the best. ठीक है. Omni got the 2 का B part also. I got it.
सर इस वाले में आपने Z1 को cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा लिया है, उसमें R आपने 1 अज्यूम किया है, वैसे भी कट हो रहा है ऐसे तो ले सकते हैं सर, क्योंकि जब क्यूब करेंगे R भी लेंगे तो R कट जाएगा सर, देख क्यूब में Z1 क्यूब प्लस Z2 हाँ बढ़िया भी अगर R सेम लेगा तो कट जाएगा ओके, तो मतलब 1 भी ले सकते हैं। अज्यूम कर रहे हैं ना, लेट लिखा है, लेट लिखा है तो लेट इन क्या बोलूं सर हाँ आगे ही बढ़ रहे हैं आगे आगे तेरे को अच्छा okay this question again, this is suppose Z and the complex number mod Z would be somewhere here, you agree, just like we got in the previous diagram. Okay, now what does Z minus 1 mean? नहीं what does Z minus 1 mean? सर Z पेपर रियल एक्सिस पे अच्छा सी हो सकता है कि 1 यहाँ पर हो, the complex number 1, the real number 1 rather, ठीक है यहाँ हो. So I am actually calculating now this distance, head minus tail, ये वेक्टर देख रहे हो, ये वेक्टर क्या है Z minus 1. So when I say what is mod Z minus 1, it is basically length of this vector. Okay, it is this length. Now let's give some names. Let's call this A, let's call this B, let's call this C. Okay. Now I'm going to use triangle inequality, which is what? mod A plus Sum of two sides greater than third side. So I can simply apply AB, length AB is less than what? AC plus BC. Okay? Triangle inequality में strict आता है, कभी equal भी हो सकते हैं when they are all collinear, when ABC is just 1 point or they are collinear. Anyways, sum of two sides greater than third side. We'll do triangle inequality अगर time मिला तो बाद में बहुत detail में कर सकते हैं इसको. But now देखो, this is mod of Z minus 1. Now, what is length AC? This is length AC, right? Now, can I say length AC is less than the length of the arc? This is chord, no? AC is the chord. ठीक है? AC को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. This vector, mod of Z minus Z bar. Is that clear? What is length BC? What is this distance? mod Z minus 1. Mod Z minus 1. Okay? समझ में आ रहा है? Okay. Now we had proved in the first part, part A. We had proved that this quantity was less than this. This is nothing but the arc. Okay? So इसके बदले अगर ये डाल दोगे आंसर आ जाएगा तुम्हारा. ठीक है? We'll be starting with geometric graphs. तो और थोड़ा this will get even more clear now कि वेक्टर वाला जो concept है clear हो जाएगा. Let's copy this. We'll start with locus now. Get more comfortable. कॉम्प्लेक्स नंबर्स का शेप में वेक्टर्स के जैसे बिहेव करने का रीजन एक तो वेक्टर्स में आई कैप ए कैप होता है और इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट होता है, उसके अलावा और कुछ है क्या? नहीं, बस एडिशन वेक्टर्स की तरह करते हैं बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है. एंड
मतलब ठीक है, there is something which we define like modulus in vectors and something we define modulus in complex numbers and they are defined in the same way. हो गया लिख के? तो ये लास्ट स्टेप नहीं समझा। हाइट सर क्या? मॉड ये थर्ड स्टेप ये हाँ पार्ट ए में प्रूव किया था। ये आर्क लेंथ था ना? कॉर्ड AC है। हाँ ये प्रूव किया था हमने। तो इसके बदले ये डाल दोगे इसमें? ठीक है? Last one. थोड़ा ही करेंगे, then we'll take a short break. Tell me when you are done copying. Done? Okay. डन सर Okay. Now what is locus? तुम्हें locus तो पढ़ाया गया है ना स्ट्रेट लाइन में? हाँ, तो locus क्या होता है? What? What is locus? Come on. Sir, the set of points traced by the Okay. It's you can say set of points which satisfies some conditions, right? path followed by Yeah, path followed by a moving point बोल सकते हो या set of conditions, like a set of points which satisfies. Sir, a point or a set of points that follows a condition. ठीक है ना. इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी मैं कुछ कंडीशंस दूंगा और आर्गेंट प्लेन पे इट विल रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ पॉइंट्स which will generate some curve or some कुछ तो होगा. देखो, now let's do this entire section with the help of examples only. Suppose if you say mod z is 3, then what locus does z represent on the argand plane? सर थोड़ा सा बड़ा लिख सकते हो क्या प्लीज? Okay. Okay. थैंक So mod z अगर 3 है, सर्कल विद रेडियस सर सर्कल yeah, if it's given to you this condition, then this equation, मतलब if this is the condition on z, z will lie on a circle. It will lie on a circle of radius 3 and center origin. Now why is that? देखो, z जो है mod z मतलब modulus क्या होता है? Distance from origin ना? हाँ. So if the distance of the origin is 3, तो वो point तो कहीं भी आ सकता है ना, इधर कहीं भी हो सकता है. So all these set of points will form a circle of radius 3. ठीक है, तुम्हारा circle start हुआ नहीं है ना? नहीं Okay, so I can't get into equation of circle. But इक्वेशन थोड़ा पता है आता है. थोड़ा सा Okay, ठीक है. So anyways, so the locus will be a circle. Now suppose if you tell me, I won't rub this part now. Another example. Mod z less than or equal to 3. What would be the locus represented by this inequation? area of circle. It would be अच्छा, so now distance from origin 3 से कम है तो वो इस सर्कल के अंदर लाएगा और on the circle. So you will get this. ठीक है? So this is mod z less than or equal to 3, and if you tell me what is mod z greater than or equal to 3, it would be the सर्कल के बाद outside the circle or on the circle. Okay, this is the outside region. Now suppose you have something like this. Mod z less than 2 less than 4.
What would this represent? Distance from the origin is between 2 and 4. Two concentric circles. So Z will lie on, yeah. You have two circles. Sir, concentric circle का area. Yes, this is of radius 2 and length radius 4. So it would represent this area between 2 and 4. समझ में आ रहा है? Okay. One final example before I ask you to copy. Suppose if I give you like this, mod Z minus 1 plus iota equal to 5. ये क्या represent करेगा? Center at 1 plus I. Circle with center 1, 1 and radius 5. Yeah, that is correct. Anybody else? How? Any ideas? Why? Why would it be that way? Because like the equation of a circle, it's you are shifting it by 1 plus iota. अच्छा okay, ठीक है, that's fine. समझ गया. सर Okay. सर z को x प्लस i iota y लिख देंगे. हाँ उससे आ जाएगा, उससे आ जाएगा. Sir, would it be a circle with center Z and radius 1 plus I? No. उल्टा बोला है, कुछ अजीब सा बोला है. देखो. See, I'll draw the diagram. Draw the complex number 1 plus iota. 1 plus iota मतलब कौन सा point? 1, 1. ठीक है? वो somewhere इधर यहाँ होगा. Agree? This is 1, 1. Now, Z कहीं तो होगा कहीं. Somewhere it will be. Just randomly just draw one point over here. Z. Now, what is Z minus 1 plus iota? It's a vector, head minus tail, which will go from where to where? कहाँ से कहाँ? हाँ. इसका head यहाँ पर होगा, इसका tail यहाँ पर होगा. Now it's given Z ऐसा है कि इस vector का length हमेशा 5 होगा. तो where could Z be? Center would be. It will be around, हाँ, it will be on a circle. तो Z कहीं भी हो सकता है. ये वेक्टर का लेंथ हमेशा 5 होना चाहिए. So it's a circle with center 1, 1 and the length, so radius is 5. समझ में आ रहा है? Okay, copy these examples. We're going to do a lot of examples. Excuse me, sir. हाँ बोलो. Sir, how to show a graph of a strict inequality, like the one we show 2 to 4, then how to show that there's a circle of second अरे and कोई fourth one nobody's is going to not cut your equal. marks if you try something different. Okay, it's fine. It's fine. अरे मतलब I know it does not include the boundary points. It does not include the two discs, the two rings, but that's okay. Fine. You don't need to. सर लोकस इनइक्वालिटी के लिए आ रहा था जैसे Z2 is less than Z is less than 4. तो सर इस लोकस के लिए अपन 2 और 4 पॉइंट्स नहीं लेते ना, like less than. तो सर वो अपन उसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एग्जैक्ट 2 का नहीं लिया, 4 का नहीं लिया. अरे ठीक है. नहीं इंक्लूड करेगा. That is okay यार. मतलब अगर सी इतना डायग्राम थोड़ा ना बनाना पड़ेगा जेई में. यूजुअली इन जेई व्हाट दे आस्क यू क्वेश्चंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा कुछ पूछा जाएगा. तो यू नो इन द बैक ऑफ योर माइंड तुमने डायग्राम ऐसे बना दिया बट 2 और 4 को इंक्लूड नहीं कर रहे सर. दैट्स इट. जस्ट कीप दैट इन माइंड. ओके. Sir, agar equation is in the form of say parabola, can it be represented on an organ plane? Yes, you can write the equation in complex form of a parabola also. अच्छा, मैं सिर्फ इसका डायग्राम बता दूंगा. You tell me the answer later on. There's a complex number which satisfies this. Now, what is the locus represented by this inequality? सर 0 से 2 का है क्या? नहीं. See, ये देखो 2i कहाँ होता है?
0, 0,0. This is 0,2. This is on the over here. Okay. Z minus 0, Z minus 2 iota. This is like head minus tail. So Z कहीं होगा इधर suppose ये Z है. ये distance जो है वो कहाँ होना चाहिए? वो less than or equal to 1 होना चाहिए. So what is the locus of Z? It's the area inside the circle. है ना? Of radius 1. Could be anywhere inside this circle of radius 1. Are you getting it? Because distance from that point is less than 1. समझ में आ रहा है? Now, Z can be anywhere on this. You need to find the maximum and minimum principal argument. करो. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सर मिनिमम 0 नहीं है. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मिनिमम 0. Sir, minimum is pi by 3. I think so. It's pi by 3 or pi by 6. I'm not sure exactly. हाँ, pi by 3. Correct. समझा? अच्छा, last time ही था. Sir, pi by 3. हाँ, pi by 3 is correct. हाँ? Sir, minimum pi by 3, maximum 5 pi by 6. Maximum is not 5 pi by 6. Maximum. हाँ sir. Maximum is 2 pi by 6. Minus 1. हाँ sir, 2 pi by 5 minus 1. समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बोलो. कितने लोगों को समझ में आ गया? हाथ उठाओ. क्या मतलब करना क्या है? इस क्वेश्चन में लोकस वाला कर्व ये मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया? सर बोलो pi by 3 कैसे है वो नहीं समझ. कि वो ठीक है. कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है? क्यों? कितने लोगों को समझ में आ रहा है सबको? इसमें प्रॉब्लम क्या है? लोकस समझ में आ गया कि ग्राफ कर्व कैसे आया? कर्व समझ में आया? वही पूछा. सर एक बार रिपीट करो. कौन सा पार्ट? which part? the curve, the circle? हाँ सर. अच्छा देखो, ये है Z1 minus Z2. ये वेक्टर है हेड माइनस टेल. बराबर? ओके, so far so good. Z एक सपोज एक पॉइंट है एंड 0,2 मतलब दिस इज 2 iota. वो एक पॉइंट है. So this is the length of the vector joining these 2 points. And that should be less than or equal to 1. यानी कि अच्छा देखो, जब equal to 1 है, it will just represent a ring. The distance between these 2 points is exactly 1. So Z can be anywhere around this point at a distance of 1 from 2 iota. और अगर मैं बोलूँ less than or equal to है, तब क्या होता है? Distance could be equal to 1 or it could be within 1. So फिर वो अंदर वाला रीजन भी फिल कर लेगा. ठीक है? Is that clear? Okay. Now, obviously देखो, Z तो मैंने बोला it could be anywhere, it could be यहाँ भी हो सकता है, Z यहाँ भी हो सकता है. Z is after all a variable point, right? कहीं भी हो सकता है. कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जिसका आर्ग्यूमेंट क्या होता है? आर्ग्यूमेंट इज बेसिकली arc Z क्या होता है? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z. जैसे you take a point over here, suppose Z यहाँ पर है, you join it to the origin, ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाता है. आर्ग्यूमेंट मतलब वो एंगल होता है, ये वाला. ठीक है? सो Z को मैं कहाँ लूँ? विद इन दिस रीजन, सो दैट ये आर्ग्यूमेंट वाला जो एंगल एक सबसे कम आ रहा है, यू टेक इट हियर, टेंजेंट. जब ये टेंजेंशियल पॉइंट लेंगे Z को, तब क्या होगा? दिस Z would be here satisfying the locus and ये एंगल मिनिमम होगा. Is that clear? Now the radius is given to be
1 and this length, this height center ये 2 है, 2 iota. So this length is 1 and this length is 2. तो ये 30 degree हो गया ना, because sin 30 is 1/2. So ये 60 degree हो गया, ये pi/3 हो गया. Okay, so argument of z minimum is pi/3. Now by common sense ये देखो, ये maximum होगा, maximum possible angle. Okay, and this is 60. By symmetry this will also be 60, right? So what is the argument of z in this case? Yes, 120. Supplementary of that. Maximum will be 120. समझ में आ रहा है? समझा? You can try this or this next. Let's try it. एक काम करते हैं, if you have any doubts in this question, you can ask me. We'll just take a break now. You're not audible. Something. So can you repeat the first question again? The first question or solution to the first question? हाँ बोलो. No, it's not a straight line, it's a ray. I'll come to that later. I'll do it after the break. First question में किसी को doubt है? First question. ये मैं break के बाद करूँ. I'll not discuss this right now. First question. Who has a doubt? सर एंगल 4π/2 क्या है? सर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर दो लाइंस पास हो रही है ओरिजिन से, इनफैक्ट मतलब लाइंस है वो इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है, तो वो लाइंस के बीच का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं क्या? मैं नाम है क्या उसके? लाइंस के बीच में एरिया नहीं, डोंट गिव इट अ नेम. वो तो एंगल हो गया, दो रेज के बीच में एंगल हो गया. सर आ गए सर. ठीक है. So reading question 2 now. यहाँ पे देखो, find the locus of argument of z equal to pi/4. Now argument of z अगर pi/4 है तो x equals y. okay. Inverse what? Is it a line? Is the locus a line? Yes. It should be a ray from origin. It's not a line, it's a ray. Okay? Z इधर है. This argument of z has to be 45. 45. So कहाँ हो सकता है z? It could be here also. Z यहाँ भी हो सकता है. It could be anywhere here as long as इसका argument pi/4 है. So this can consisting of all these points. It will not be the entire line because if you continue downwards, you take this point over here. इस point का argument क्या है? -3 pi/4. It's not pi/4, so it's only a ray. Okay, it's not this. अच्छा, B वाले में, just you can get from this, argument of Z lies between pi/3 and pi/2. तो कहाँ होगा Z? Which region or which area? Which? Sir, if we were asked to write the equation of this line, then what will it be? This ray. बस. ठीक है? But I'm not asking you to write the equation in 2D form, just representing this on the plane, that's it. ठीक है? अच्छा, now. Thank you, sir. Yeah. Now, ये वाला क्या होगा? We draw two rays.
एक है argument z equal to pi by 3. Okay, make this, draw this pi by 3 wala angle. This is argument of z equal to pi by 3. And another one you draw argument of z equal to pi by 2. Which one would that be? ऐसा होगा ना? Argument of z equal to pi by 2. Now the complex number should have argument in between the two. So where would z lie? Z can lie anywhere in this region. If it lies anywhere in the region, the argument would be between 60 and 90. So this is the area represented by. So there is no name given to that area. Why should there be a name given to everything in life? Okay. C वाला. अच्छा. Now ये जो है, if mod of argument it's less than pi by 4, then I can say that argument of this quantity will lie between pi by 4 and minus pi by 4. This you have done in your chapter inequations. Okay. Mod x is less than 1, x lies between minus 1 and 1. Now ये इसका क्या करूँ मैं? How do I calculate the locus? बोलो. Z minus 2 क्या ही है? Z minus 2 क्या है? क्या है Z minus 2? Yes, वो लॉजिक फॉलो करो. ये है पॉइंट से 2. Z यहाँ होगा. Suppose if I am going to draw argument of Z minus 2 equal to pi by 4. वो कैसा होगा? This is 2. Now Z minus 2 represents this vector. Correct? It represents this vector. And इस vector का argument pi by 4 होना चाहिए. तो मतलब ये ऐसा है, ये वाला जो angle है वो pi by 4 होना चाहिए, right? So Z could be any point on this ray, like this. Similarly, you take RZ minus 2 minus pi by 4. It would represent what? This ray equal to minus pi by 4. समझ में आ रहा है? So this vector का argument minus pi by 4 है. अच्छा, what is when this lies between the two? It would be the area over here. समझ में आ रहा है? Yeah. And I think third one is not very simple now. Please try. Sir, is it pi by 3? I think so. I think so. थर्ड वाले का आंसर कैसे होगा? Mod Z is between 2 and 3, so Z should lie between the two concentric circles. Not only that, argument of Z का mod should be less than pi by 3. मतलब arc Z should lie between pi by 3 and minus pi by 3. ठीक है? So what would this? How would we represent this?
arc Z between between हाँ ये argument pi by 3 है, ये argument क्या है minus pi by 3. So we are actually calculating this area. How to calculate this area? Area of the big sector minus area of the smaller sector. ठीक है ना? So area of the big sector minus area of the small sector. This angle is 2 pi by 3. बड़े वाले का रेडियस 3 है, इसका 2 है. So this becomes half r square theta minus half r square theta. So this is pi by 3 into 9 minus 4, this is 5 pi by 3. Simple enough? ठीक है? देखो, look at the first one. Mod z minus 1 plus mod z minus 4 is 3. Okay. Now let's try to interpret this geometrically. जैसे, imagine you have a complex number which is z. Now, what do these 1 and 4 correspond to? 1 and 4 on the axis, real axis. Suppose this is 1. Suppose this is 4. Now, this vector is what? Z minus 1. So this length is what? Z minus 1. What is this? Length is mod Z minus 4. Getting it? Yeah. Okay. This length plus this length should be 3. What is the locus of Z? Ellipse with focus. It lies on the real axis between 1 to 4. Correct. अच्छा देखो एक बात बताओ, this length plus this length should be 3. And what is 3? 3 is this distance. अच्छा, have you heard of triangle inequality? Yes. Sum of two sides has to be greater than third side. Correct? How can sum of two sides be equal to the third side? That never happens in a triangle. That only happens if this Z actually lies on the axis. That means the axial diagram, this diagram is wrong. That means your point Z actually lies here. If your point Z lies here, then this distance and then this distance is equal to 3. Otherwise, you will form a triangle, and in a triangle, this distance plus this distance has to be greater than 3. So it won't be possible. So what is the locus of Z? It's actually this line segment. It will lie on this line segment. Is this clear? Okay. Now why don't you try the next one? Sir, how do we find the equation for such a line? What is this line? The x-axis. Y equal to 0. हो गया. You don't need to do anything. Why are you so concerned about finding the equation of the line? Okay. Yes. सेकंड वाले का आंसर किसी anybody got the answer? सर सर्कल होगा. Yes. सर्कल with diameter 3. Okay. अच्छा. It's the same diagram.
you have 2 points 1 and 4. Now there is a point Z. This is length mod Z minus 1. This is length mod Z minus 4. Now over here, and this length is 3. So इस लेंथ का स्क्वायर प्लस इस लेंथ का स्क्वायर इज ये लेंथ का स्क्वायर. ये क्या बन रहा है? पाइथागोरस. इसका मतलब ये 90 है. पाइथागोरस थ्योरम है. I don't know the spelling of Pythagoras, तो dot 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 लिखे. हाँ, तो anyways ये Pythagoras है. So obviously it is subtending 90 degree on these 2 points, right? So Z का locus will be circle. So it's a circle with diameter and points as 1 and 4. ये जो 1 है और ये जो 4 है ये diameter के end points. Is this clear? Yes sir. ठीक है? सर्कल वाला पार्ट नहीं समझा. पाइथागोरस का समझा सर. अबे एंगल इन सेमीसर्कल 90 होता है, पता है ना तेरे को? राइट. हाँ, एंगल इन सेमीसर्कल, in case you didn't know. हाँ. हाँ करेक्ट. करेक्ट. हाँ. So in the third question, you have 2 points 1 and 5. Z is a point over here. ये वेक्टर है, ये वेक्टर है. This length is mod Z minus 1. This length is mod Z minus 5. Now देखो, इसको हम प्रॉपर्ली लगा सकते हैं. We can say this is mod Z minus 1 upon mod Z minus 1 is 1. तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे, I will get these two are equal. So Z ऐसा है कि ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है. तो Z कहाँ लाई करेगा? On the perpendicular bisector. On the perpendicular bisector. Like if you take any point on the perpendicular bisector, ये लेंथ इक्वल आएंगे हमेशा. अगर ये वाला लिया तो this length will be equal to this length. You know that, right? Perpendicular bisector. तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x equal to 3. x equal to 3 ना ये लाइन. That's the locus. Okay. Now ये वाला थोड़ा problematic है. You people haven't done. सर अपोलोनियस सर्कल होगा क्या? हाँ. हम you have done Apollonius circle. अच्छा नहीं, many people have not done Apollonius circle. Many people have not done Apollonius circle. So I'll have to explain what Apollonius circle is. तो मैं circle की equation में नहीं कराई गई है. The circle chapter start नहीं हुआ. So I will explain this part. Okay. एक काम करो. सेकंड क्वेश्चन है सर, वो दो ही वो नहीं ऊपर सर 5 सी सर्कल. सर वो एक ही सर्कल उसका रेडियस 3 है ना? डायमीटर 3 है. हाँ मतलब 1.5 रेडियस 1.5 है ना? हाँ. सर 5,06 सर्कल उसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर. What? किसमें? सर वो लास्ट वाला, वो 4th वाला. ये वाला. हाँ सर. रेडियस क्या है? 3 सेंटीमीटर. I don't think so. I don't know. No. Radius is not. अच्छा एक काम करो. I will need to give some time for this. इसको थोड़ा बाद में करेंगे. ये वाला करो. You will be able to do this one. I will be able to explain to you this one at least. But ये वाला I will explain. Okay. सर
In the what? So in the fourth question, in which you have made us, yes sir. In the circle of radius 1 cm and center 5,0 real axis. Center is not 5,0. Okay sir. Sir, center 5.5. Wait, I'm coming to it. Let me do. अच्छा, ये वाला दिखने में बड़ा भयानक है। सर, फोर्थ वाला। सर, फोर्थ वाला हाँ, अपोलोनियस सर्कल है। मैं थोड़ा इसकी थ्योरी बताता हूँ, ठीक है? पहले मैं let me just come to this. ये जो इक्वेशन है दिखने में एकदम खतरनाक ही क्या चल रहा है क्या है? But देखो इसको हम कैसे करेंगे? See, what I'll do? इस पूरी इक्वेशन में 1 प्लस आयोटा कॉमन लेंगे, मतलब पूरे एक्सप्रेशन में। So, जब मैंने 1 प्लस आयोटा कॉमन लिया, क्या बचता है? Z minus 2 अपॉन, ठीक है? Now, I will use the property mod Z1 Z2 is mod Z1 into mod Z2. So I can say it is इसका mod into इसका mod. So I can say it is इसका mod, which is 1 plus iota का mod into इसका mod. अच्छा, 1 plus iota का mod क्या होता है? √2 होता है. Okay? वो कैंसिल हो जाएगा इस √2 के साथ. Now you can divide the two complex numbers by taking conjugates. 4 क्या हो जाता है? 1 plus 2 iota है, 1 minus iota. 1 plus 2 plus 2i minus I. So finally you get an equation like this, mod z minus 3 plus I. क्या आ गया? So what is this locus now? क्या है ये? बोलो. P1 सेंटर है, ये Z है, ये वेक्टर का लेंथ 4 है, तो रेडियस इज 4, सेंटर इज दिस. ये घूमेगा इसके आसपास. That's your locus. आ रहा है तेरे को? आ रहा है तेरे को? नहीं. क्या है? बाकी लोग को समझ आ रहे हैं ना? Now let me talk about. Sir, please wait. हाँ ठीक है, कॉपी करो. चलो. किसको समझाओ? आज दिमागी खराब. अच्छा, I am assuming you all don't know how to equation of circle, so मैं अलग ज्योमेट्री से समझा रहा हूँ. Is it the circle with center 1,0 radius 1? Which one? This one? Yes sir. No. 1,0 not the center. नहीं. Please copy this. Sir, 3,06 circle और उसकी radius 4. I'll check it out. The center will definitely not lie between 1 and 5. Please copy first. Sir, center 5.5, 0. Radius 1.5. Center 5.5. ये आंसर है. मैं अब इसका explanation देता हूँ. Okay, all of you done copying this? Okay.
So I just want to talk about the Apollonius circle. Now, देखो, if I have two fixed points and if I have a variable point. Now, suppose if the ratio of the distances, distance PA upon distance PB is 1, then it's like this question. It's a perpendicular bisector, right? Perpendicular bisector is the locus. But if PA upon PB is some number k, where k is not 1, okay? In this case, the locus of P is a circle, and that circle is called the Apollonius circle. Now, देखो, for those of you who do not want to learn I can do this question in two ways, either by geometry or by algebra. So how do I do it by algebra first? देखो, simply what you do is, in this Z, we say let Z be x plus iy. Let Z be x plus iy. So Z represents the point x comma y. Okay. Now I will write it like this. So mod Z minus 1 is 3 times mod Z minus 1. ऐसे लिख सकते हैं. तो हम इसको x plus iy लिख दिया. Okay. Now you get x minus 1 is equal to 3 times x minus 5 plus iota y. Now mod क्या करता है? Real part को square करता है and imaginary part को square करता है. And this is 3 times. यहाँ पे real part है x minus 5. Okay, square करता है. Now to get rid of the square root, you will have to square again. तो ये बहुत after some time तुम्हें एक equation आ जाएगा. जब equation of circle तुम लोग पढ़ेंगे, तो you will know how to find the radius and the center. There are some formulas, ठीक है? minus g minus f वैसा. Center. हाँ, minus g minus f is the center. Center and g square radius minus c square. तुम्हारा circle start हुआ नहीं है ना? This is the radius. Okay. So ऐसा एक equation आ जाएगा. Now तुम लोग बाद में formulas कर लोगे, ठीक है? So let's not do it by this. I want to show you the geometry part of this. This is quite interesting. Geometrically कैसे करते हैं? Now pay attention now. ये थोड़ा सा geometry जो है थोड़ा सा heavy है. Okay. Supposing this is A and this is B, and this is the point P. These are my fixed points. This is a variable point. Now this length is k times this length. Length PA is k times length PB. Okay. Now locus होता क्या है? Locus basically is set of all points which satisfies this condition. P is only one of them. इसके अलावा और भी points होंगे. This is just one such point. Now I am going to randomly take one point over here. Let me call it P1. And I will take this point in such a way that वो इस line segment को k is to 1 internally divide कर रहा है. Can I take a random point here like this? It's not really a random point, it's actually a fixed point because A and B are fixed. Now, does P1 satisfy this equation? Does P1 satisfy this equation? It does. Okay. So, P and P1 lie on the same locus. They lie on the same curve. Is this clear? Okay. So, P1 also satisfies this condition. Now, I am going to take another point. Let me just rub this off. Okay. Let's take another point. I hope you all know external division. Yes. Okay. So let me extend this line segment. Let me take another point P2. Now P2 एक ऐसा point है. So P2 divides
AB externally in the ratio k:1. मतलब it is satisfying this condition. P2A is k times P1A. P2B. यानी ये distance is k times this distance. Like if this is L, this is k times L. Are you understanding this? तो एक externally भी एक point मिल सकता है तुम्हें, such that this condition is satisfied. Is that clear? Okay. So P1 and P2 also satisfies. P2 also satisfies this condition. Now, do you all know angle bisector theorem? Yes. What is angle bisector theorem? Angle bisector divides the line. Yes. ये ratio k:1 है ना? PA is to PB is k:1. And if I draw the angle bisector and the angle bisector meets the side at P1, then P1 भी इसको k:1 में divide करेगा. That is called angle bisector theorem. I think, have you done that in straight lines? Something? Yeah. Okay. Now angle bisector theorem का एक I'll write down the theorem statement for angle bisector theorem in case you do not know it. Angle bisector theorem का एक और version है. That's for the external angle bisector. This is the internal angle. This is the external angle. When you take bisector of external angle, it would reach point P2. If you take internal bisector of this angle, it would reach P1. Are you getting it? Okay. So P1, let me summarize this. P1, P2 are 2 points which satisfy this condition. P is also a point which satisfies the locus. And इसका angle bisector इधर meet करेगा, इसका external bisector ये meet करेगा over here. अच्छा, now एक बात बताओ, internal bisector और external bisector के बीच में angle क्या होता है? 90 होता है. Okay, does that ring a bell? Yes. ये angle 90 होता है. Internal और external bisector के बीच में angle 90 होता है. So, हाँ, there are 3 points on the same circle, and P will always subtend 90 degree between these 2 points. Is that clear? So, this is a little heavy. Locus of P is a circle, okay, P2, P1. with P1 and P2 as endpoints of that. Is this clear? I will write angle bisector. हाँ. Sir, could you explain that how external bisectors, external angles bisector is passing through P2? अच्छा, see, do you know the internal bisector वाला theorem at least? Yes, sir. Okay, see, but do you know the proof? अच्छा, how do you know the कि ये इससे पास करेगा? तुम्हें वो पता है? उसका proof बताया है? हाँ sir, वो भी पता है. How? What do you use? Sign? We have to make. No sir. We'll extend P. Have you used नहीं sir, BPT? हाँ BPT यार. हाँ, ठीक है. हाँ sir, BPT वाला. The way that you use the way that you prove the internal wala for the internal point and the external angle wala is the same. Okay. If you can use BPT to prove this, you can also use BPT to prove this. And there are other methods also. You can use sine rule also to prove. Sine rule अगर तुम्हें आता है तो it's actually 2 लाइन में ये prove हो जाता है. ठीक है? दोनों के लिए same method है proving. ठीक है? I can show you some other time. But अभी is this clear? Copy कर लो. Mind blown. नहीं, ये समझा भी. ओके, कॉपी करो. सर. हाँ. सर, हम क्या मॉड के अंदर कंपोनेंट डिविडेंड लगा सकते हैं? मैंने लास्ट टाइम भी पूछा था. What do you mean मॉड के अंदर कंपोनेंट डिविडेंड लगाना?
है मतलब अब ये जो एग्जांपल है उसमें अगर कंपोनेंट और डिविडेंड लगाएंगे तो नीचे वाला जेड कट जाएगा। अरे नहीं। कंपोनेंट और अभी ये तू बोल रहा है ना, एक मिनट, तू ये बोल रहा है ना कंपोनेंट और डिविडेंडो तो लगा सकते हो मगर सही लगाओ। व्हेन यू अप्लाई कंपोनेंट और डिविडेंडो यू आर एडिंग हियर और यहाँ पे यू आर सब्ट्रैक्टिंग हियर। अच्छा ये लगा दिया, अब तू यहाँ ऐसे कैंसिल कर रहा है इसको, ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। वापस एक्सप्लेन कर सकते क्या पेन है? P1 P2 का मतलब समझ गया कि वो लोग इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे, फिर उसके बाद अरे इस ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर P1 पे मिलेगा, आपको पता है तेरे को? पता है। हाँ। क्यों पता है? क्यों पता है मतलब कैसे? What I mean to say is कि do you know why it will meet here? What angle bisector theorem? पता है ना? ये ऐसी मुंडी हिलाना। एंगल बाइसेक्टर यार तुझे एंगल ऐसे पढ़ा है ना एंगल बाइसेक्टर थ्योरम? हाँ प्रूफ याद है। सब बैचेस में नहीं हुआ है। पीसी में पढ़ा है ना? नहीं सर, एएम सर का 4, 5, 6 में बचा है। क्या बात एक मिनट 4, 5, 6 में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ा है ना? पढ़ा है। सर आप एक बार बता सकते हो प्लीज? अच्छा एक मिनट लिखने दो। अच्छा आई जस्ट पहले कॉपी कर लो, आई विल शो यू प्रूफ ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। या हम इसको यहीं पे खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट टाइम और खतरनाक ज्योमेट्री होगी थोड़ी सी। बस सर हो गया क्या लेक्चर? नहीं, just last part I just finish this off. थोड़ा मैं proof बता रहा हूँ if some people don't know angle bisector theorem का proof. Then we are pretty much done. Next time we'll do slightly more dangerous geometry and I might start with roots of unity also. Roots of unity, omega. Tell me when you are done copying. Okay? हाँ बोलो। सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर की सर प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? देखो अगर तुम्हें कोई तुम्हें बुकलेट मिल जाती है तो वहाँ से कर सकते हो, या तो फिर you can get reference कौन सा वर्ड? सर आप कोई एनसीईआरटी में कुछ नहीं है। हाँ एनसीईआरटी से शुरुआत तो कर ही सकते हो। सर हो गया बट वो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। सर आप कोई शीट प्रोवाइड कर सकते हो क्या? हाँ इसीलिए। ठीक है हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम मैं दे दूंगा। ओके ओके थैंक यू सर। कॉम्प्लेक्स नंबर सर हाँ बोलो। सर ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से अपन सेंटर और रेडियस कैसे निकालेंगे? अच्छा बताता हूँ ना, देखो सी मैं रब कर रहा हूँ। सेंटर कैसे निकाले? ओके देखो जो सेंटर होगा वो ऑब्वियसली P1 और P2 का मिड पॉइंट होगा, राइट? और P1 और P2 के बीच में अगर हमने डिस्टेंस निकाल लिया दैट इज योर डायमीटर, ठीक है? नाउ P1 और P2 कैसे निकाले? एक्सटर्नल डिवीजन इंटरनल डिवीजन, यू नो सेक्शन फॉर्मूला है ना? इन द क्वेश्चन इट वाज 3:1, 3:1 सेक्शन फॉर्मूला लगा दो। ओके सो लेट्स से फॉर दैट क्वेश्चन सी अपने क्वेश्चन में A was the point 1,0, B was the point 5,0 एंड ये जो रेशियो है वो K:1 मतलब 3:1 था, राइट? अब P1 क्या होगा?
इंटरनल डिवीजन लगा दो 3:1 अपॉन 3 + 1, ये तो 0 ही होगा। सर 4,0 आ रहा है। एंड एक्सटर्नल वाला पॉइंट क्या होगा? 3:1 हो गया ना? P2 ओके ना? ओके सर। हाँ, so just one last point I want to make. कई लोगों को एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, just show you the proof. Okay. Okay, this is the angle bisector. This is D. ठीक है? Now let's say this is K:1. Okay, then we have to prove that this is also K:1. This ratio. Now how do we do that? Sine rule आता है तुम लोगों को? Sine rule. In any triangle, if you have a triangle ABC, this is angle ABC, this is side A, this is side B, this is side small c length. A upon sine A is equal to B. B upon sine B is equal to C upon sine C. क्या आता है? हाँ. Now एक काम करते हैं, ये ट्रायंगल लेफ्ट वाला ट्रायंगल कंसीडर करो. दो ट्रायंगल लेफ्ट वाला और राइट वाला. ओके? So लेफ्ट ट्रायंगल में let's apply sine rule. So see, this is angle B, this is angle A/2. Let's say this is theta. Okay? Now what we do? We take this side BD. BD upon sine of the opposite angle A/2. है ना? मतलब side length opposite angle. See the relation? Is equal to let's say this is L and this is K times M, na? Is equal to this side upon sin theta. KL upon sin theta. Now consider right triangle. अब इसमें क्या है? ये एंगल पाई माइनस थीटा होगा. But this angle will be A/2 only. Now apply sine rule in this triangle. ये length DC by sine DC upon sin A/2 is L upon this angle. L upon sin pi minus theta. Now दोनों को डिवाइड करो. sin pi minus theta sin theta कैंसिल हो जाएगा. Okay? So BD DC ये sin theta ही है. ये कट तो हो गया ना? BD upon DC is K upon 1. So एंगल बाइसेक्टर जब ड्रॉ करोगे तो K:1 में ही उसको कट करेगा. ठीक है? एक्सटर्नल एंगल के लिए भी आप प्रूव कर सकते हो. वेरी सिंपल. ओके, सो दैट्स द एंड ऑफ द क्लास. नेक्स्ट टाइम आई गिव यू सम असाइनमेंट. तुम लोग अगर रेफरेंस बुक से कुछ करना हो एक्स्ट्रा खुद से, बहुत सारे रेफरेंस बुक्स है. यू कैन लाइक लुक अप. फिलहाल सेंगेज अलजेब्रा देख लो, या फिर वन ऑप्शन इज दिस और एसके गोयल अलजेब्रा. आई वुड प्रेफर कि तुम लोग ये वाला कर लो स्टार्टिंग में एटलीस्ट. ठीक है? एनसीईआरटी का बुक में काफी सिंपल क्वेश्चन है. सेंगेज